are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your maths class. I am Achal Singh welcoming you all once again to your maths class. So class, in our previous session, as you know, that we have started with a new chapter, that is chapter number 7, factors. Okay, factors and multiples. This is the complete name of the chapter, that is factors and multiples. So in the last session I have told you that what are the factors, okay, and how you will calculate the factors by using the multiplication and the division method. Okay, so I'm just giving you a small recall. So okay, so first of all I'll just write down the topic here. The topic is chapter number 7, that is factors and multiples. That is factors and multiples. Okay, chapter number is 7. So here it is given what is the meaning of factors. So factors are the numbers, okay, which divide a given number completely. Okay, so which can divide, जो भी number हमें दिया है, जो उस number को, suppose the number 10 is given and the numbers who can divide number 10 completely, that means there is no remainder is left. Okay, the numbers which are completely divisible by 10, they are known as the factors of 10. Okay, so what are the factors? So a factor is an exact divisor of the number. Okay, and after that I have told you, I have given you small, so I have explained that what are the factors, how to calculate or how to find out the factors of a given number. So we can find the factors by using two methods, that is division and multiplication. Okay, so the numbers जिनके, okay, so I have given example of 12 and 18. So the numbers जिससे कि आप, okay, suppose you have to find the factor of 10. So you have to find the factor of 10. आपको 10 का factor ढूंढना है. Okay, so the numbers जिनका product, okay, so when we when we multiply two numbers and their product is 10, they are the factors of 10. Suppose 1 multiplied by 10 is equal to 10. 2 multiplied by 5 is equal to 10. Okay, so that means यहाँ पे 1, 2, 10 and 5. So the factors of, और किसी नंबर से नहीं आता 10 मल्टीप्लाई करके तो प्रोडक्ट. So the factors of 10 are 1, 2, 5 and 10. So जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारा जो प्रोडक्ट है, दैट इज, जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट है, दैट इज हमारा प्रोडक्ट 10 आए, सो दे आर नोन एज द फैक्टर ऑफ दैट गिवन नंबर. Okay, this is, I have shown it with the help of the, that is how you are going to calculate the factors of the given number by multiplication. Next is division. Okay, suppose you have to find the factor with division. Okay, so for now you have to find the factor with division. Factors of 10. Okay, आपको 10 का ही फैक्टर ढूंढना है by using the division method. So now we have to divide such numbers who, okay, that with 10. Okay, we have to divide 10 with such numbers. Okay, that is complete, by which the 10 is completely divisible. So हमें 10 को उन नंबर से डिवाइड करना है जिससे कि जो 10 है हमारा वो completely divisible हो. Okay, so जैसे कि 10 divided by 1, that will be 10. 10 divided by 2 is equal to 5, या 10 divided by 5 करेंगे, that is 2. तो यहाँ पे 5, 2, 2, 5. So that why we will not take this. So the factors are 1,
2, 5 and 10. तो ये चारों क्या है हमारे, तो the divisor and the quotient, they all are the factors of given number. Okay. Now after that, now the most important thing that we will start today, that is properties of factors. So what are the various properties of factors? Okay, तो हमें properties of factors हम आज करेंगे. So for that, first of all, I just tell you that you have to write all the properties in your notebook. Okay, पहले समझिए and then write it down in your notebooks as well. Okay, so now we are starting with properties of factor. We are starting with properties of factors. Factors, that will be factors. Properties of factors. So the first property is 1 is a factor of every number. This is the first property. First property is 1 is the factor of every number. 1 is the factor of every number. जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर है. Okay, so because every number is completely divisible by 1, so that's why 1 is the factor of every number. So you can take example. Suppose the number is 26. Divide by 1. 26 divided by 1. 1 2s are 2 minus 0. Bring down the next number 6. 1 6 are 6. 6 minus 6 0 or 1. Answer is 26 and no remainder is there. So this is 26. So that means if we divide any number with 1, okay, that will be completely divisible. तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हमारा पूरी तरह से completely divisible है 1 से. So that's why it is being said 1 is the factor of every number. So 1 is the factor of every number. तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे that will be completely divisible. So that's why I am telling you that 1 is the factor of every number. Okay, this was the first property. Second one is every number other than 0 is a factor of itself. Okay, so this is the second property. Every number other than 0 every number other than 0 is a factor of itself. Okay, तो every number is the factor of itself. Okay, जो हर नंबर है, कोई भी नंबर हो बेटा, वो अपना खुद का फैक्टर है एक्सेप्ट 0. 0 के अलावा हर नंबर अपना खुद का फैक्टर है. तो देखिए तो दो चीज़ें जो आपको याद रखनी है. 1 is the factor of every number and every number is the factor of itself. हर नंबर अपना खुद का फैक्टर है. ओके, कैसे? देखिए अगर आप 21 डिवाइडेड बाय 21 यू विल गेट 1. 34 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू 1. तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हुए? इसमें 1 और 21 दोनों फैक्टर हुए. इसमें 1 and 34. So that means 1 is the factor of every number and number this is 21 not 20. Okay, this is 21. तो हर नंबर खुद का फैक्टर जरूर होता है. So this is the second property of factors. 1 is the factor of every number and every number is the factor of itself.
वन हर नंबर की प्रॉपर्टी है, सॉरी हर नंबर की फैक्टर है, और हर नंबर अपना खुद का भी फैक्टर है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप किसी भी नंबर का फैक्टर जब आप ढूंढेंगे तो जो उसका हाईएस्ट फैक्टर होगा दैट विल बी द नंबर इटसेल्फ। ओके, आई जस्ट गिवन एन एग्जांपल। अभी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम। ओके, सपोज मैंने आपको बोला दैट यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 9। ओके, सो आपको बोला गया दैट फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 9। सो नाउ यू विल राइट डाउन द नंबर्स विच कैन डिवाइड 9 कम्प्लीटली। अगर आपको मैंने बोला है 9 के फैक्टर्स बताइए, तो आप वो नंबर्स लिखेंगे जिससे कि 9 कम्प्लीटली पूरी तरह से डिविजिबल होगा। करेक्ट? ओके, सो नाउ वी हैव टू राइट द फैक्टर्स ऑफ 9। अब देखिए 9 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? दैट विल बी 1, 3 एंड 9। तो 1 से भी 9 कम्प्लीटली डिविजिबल है, 3 से भी होगा एंड 9 से भी होगा। सिमिलरली इफ आई आस्क यू टू राइट द फैक्टर्स of 12, so 12 will be completely divisible by 1, 2, 3, 4, 6 and 12. ओके, अब आपको देखिए एक चीज़ आपको मैं बता दूं बेटा, देखिए 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यू कैन सी 1 9 का भी फैक्टर है, 12 का भी, और आगे जितने भी नंबर्स के आप फैक्टर्स निकालेंगे उसका जो 1 है वो सबका फैक्टर्स रहेंगे। ओके, सेकेंड थिंग, एवरी नंबर अदर देन 0, 0 के अलावा, सो यू हैव टू एक्सेप्ट द 0 इन दिस केस। ओके, आपको 0 को इसमें से निकालना है। एवरी नंबर एक्सेप्ट द 0 या अदर देन द 0 इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो अपने खुद का फैक्टर है। कोई भी नंबर हो वो अपने खुद का फैक्टर है। सो यू कैन सी, अगर हमने यहाँ पे 9 का फैक्टर ढूंढा, so 9 is the factor of 9, 12 का फैक्टर 12 is the factor of 12। इससे पहले हमने एग्जाम्पल दी थी 10 का, the largest factor of 10 is 10। तो यहाँ पे दो कंडीशंस मिल रही है। एवरी नंबर, द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। जो नंबर है वो अपने खुद का ही सबसे बड़ा हाईएस्ट फैक्टर है। ओके, तो देखिए इसमें सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है? 1। 1 is the smallest factor of every number। These two things that you have to keep in your mind। 1 is the smallest factor of every number and the number itself, वो नंबर खुद अपने खुद का वो सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके, अब देखिए इसमें आपसे पूछो 1, 3, 9 सबसे बड़ा कौन है? दैट यू विल से 9। वैसे ही 1 से लेकर यहाँ पे जो दिखे नंबर, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 12। तो देखिए 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। तो 9 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 9। 12 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 12। Okay, so every number is the factor of itself and it is the greatest factor as well of that given number. Clear? चलिए, so this is the second property. Okay, so you have to write it in your note. So write down these two. The first is 1 is the factor of every number. Second number is every number other than 0 is a factor of itself. Moving next to the third property of factors. The third property of factors is every number is a factor of 0. Every number is a factor of every number is a factor of 0। हर नंबर 0 का फैक्टर होता है। देखिए 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है और हर नंबर 0 का फैक्टर होता है। हाउ? लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ओके, अगर आप ओके सपोज यू डिवाइड 29 विद 0, सो 29 को 0 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 29 डिवाइडेड बाय 0, 0 2s are 0, सॉरी यहाँ पे सॉरी,
just use a wrong number, not division by multiplication. देखते हैं 0 multiplied by 29, that is 0. 0 multiplied by 31, 0. 0 multiplied by 249, that is 0. So अगर मैं आपसे बोलूँ what are the factors, so you will say इसमें होगा 0 and 29. From here you can get your 0 and 31. From here 0 and 249. Okay, so this is the point here that every number is a factor of 0. तो 0 के factors कौन से हैं? सारे numbers. 1 is the factor of every number and every number is a factor of 0. तो क्योंकि अगर हम किसी भी number को 0 से multiply करते हैं, you will get 0. If we divide any number with 0, you will get 0. So if we multiply or divide any number with 0, you will get 0. So that's why every number is the factor of 0. So if you multiply or divide any number with 0, you will get 0. So this is what I am telling you, that every number is a factor of 0. Clear? This is the third property of factors. This is the third property of factors. Moving next to the fourth one. The fourth is a factor of a number other than 0 is either less than or equal to the number. Okay, this is a very important property जो आपको याद रखनी है बेटा. Okay, write down the fourth property of factors. A factor of a number, a factor of a number, a factor of a number other than 0, other than a factor of a number other than 0 is either less than, is either either less than, is either less than or equal to the number, or equal to, or equal to the number. Okay, just read the point very carefully and you can easily understand it. This is the fourth property. A factor of a number other than 0 is either less than or equal to the number. तो 0 के अलावा, so exemption from here is 0. So now what I am telling you, let's hear it very carefully. A factor of a number, किसी भी number का जो भी factors होते हैं, okay, is either less than, या तो वो उससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे. So the factors of any given number will either be less than or equal to the number. Suppose I told you to find the factors of 15. I told you to find the factors of 15. So that means आपको ये वो numbers बताने हैं जिससे कि जो 15 है वो completely divisible है. Now you have to identify or you have to tell me that what are the numbers with which the 15 is completely divisible. So what you will say, ma'am, 15 is completely divisible by 1, 3, 5 and 15. Okay. So if I told you to find the factors of 15, आप क्या बोलोगे ma'am? 15 is completely divisible by 1, 3, 5 and 15. So that means 1, 3, 5 and 15, they are the factors of 15. वो सब क्या है? 15 के factors हैं. So यही हमारा question भी है, sorry यही हमारी property भी है. A factor of a number is other than 0, exemption is 0, 0 को याद रखिएगा, is either less than or equal to the number. किसी भी नंबर के जो भी फैक्टर्स होते हैं या तो उस नंबर से वो छोटे होंगे
या तो वो उसके इक्वल होंगे. सो यू कैन सी हेयर 15 का फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1, 3, 5 and 15. So 1 is also smaller than 15, 3 is also smaller than 15, 5 is also smaller than 15 and 15 is equal to 15. So this proves the fourth property of factors. So a factor of a number is either less than, एक नंबर का जो फैक्टर है या तो उससे छोटा होगा और either it is equal to the 15. So the factor of a number is either less than or equal to the number. Clear? So this is the fourth property of factors. So you can pause the video and note it down in your notebooks. The third property is every number is a factor of 0. Fourth is, this is an example. You can write the example as well if you want. You can write it. So every number is a factor of 0. The fourth is a factor of a number other than 0 is either less than or equal to the number. Okay, so this is an example. The factors of 15 are 1, 3, 5 and 15. So 1, 3, 5 and 15, they are smaller than 15 and 15 is equal to 15. So that means either they are smaller or they are equal to the 15. Clear? So this is the fourth property of factors. So you can pause it here and note it down in your notebooks. Chaliye. The next fifth property of factors is, now moving to the next one. This is also very important. देखिए every property has its own importance. Okay, हर property की कुछ ना कुछ importance है. Every property has its own importance. So now we are moving to the fifth property of factors. That is, okay, so the fifth is every number except 1 has at least 2 factors. Every number except 1 has at least 2 factors. तो हर नंबर के दो फैक्टर्स होते ही होते, लीस्ट कम से कम. एवरी नंबर हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर्स. तो हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं. एवरी नंबर हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर्स. हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं. कम से कम, मिनिमम उन्होंने मिनिमम बताया, मैक्सिमम कैन बी एनीथिंग. ओके, एनी नंबर ऑफ फैक्टर्स. तो मिनिमम इज every number has minimum 2 factors, but here the exemption is also again 1. So 1 के अलावा every number has at least 2 factors. So write down the fifth property. Every number except 1 every number except 1 has at least 2 factors. Has at least 2 factors. Has at least 2 factors. ओके, तो कहते हैं हर नंबर के 1 के अलावा हर नंबर के एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होते हैं. सो एक्सेप्ट 1 एवरी नंबर हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स. सो इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़, अगर आपको हमारी पहली 2 प्रॉपर्टीज़ याद हो तो देखिए उसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है. पहली प्रॉपर्टी क्या थी? 1 इज दी फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. ओके, दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. 1 हमारी हर नंबर का जो 1 है वो हर नंबर का फैक्टर है. दिस वॉज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी. करेक्ट. ओके, द सेकेंड प्रॉपर्टी वॉज एवरी नंबर इज दी फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपने खुद का भी फैक्टर होता है. सो दिस वॉज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी. सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी का जो आंसर है वो हमारी फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज़ में घुसा हुआ. प्रॉपर्टीज़ में आपको मिल जाएगा, घुसा नहीं मिला, हमें मिल जाएगा. तो 1 हर नंबर का फैक्टर है. सो दैट मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड हर नंबर अपने खुद का भी फैक्टर है. So every number has at least 2 factors. So as I can give an example, suppose you have to find the factors of 2. आपको बोला जाए factors of 2.
So 2 is completely divisible by 1 and 2 only. Next, factors of 3, that is 1 and 3. Now, factors of 1, that will be 1. So that means except 1, that's why except 1 is given here. So every number has at least 2 factors. So that means factors of 1, this is not correct. Okay, so हर नंबर के at least 2 factors होते हैं. वो 2 factors कौन कौन से होते हैं? The first is 1 is the factor of every number. The second is the number itself, वो number खुद. Okay, that number itself is the factor of the given numbers. Okay, so that at least 2 factors are the number 1 is the factor of every number. The second thing is and the number itself is the factor of it. वो अपने खुद का भी factor होगा. Okay, so this was the 5th property of factors. Okay, so with this we have done the properties of factors. Now we will move to the some problems to the sums for the revision part. Okay, so now we are going to do we are going to calculate, we are going to find out the factors of the given number from the chapter, from the exercise that is given ahead. Okay, so we are starting with exercise 7.1. So let's begin with the exercise now. So how? Okay, now in the exercise you will need to know that how you are going to find that whether the given number is a factor or of the given जो भी है factor है कि नहीं. Okay, so let's begin with the exercise 7.1. Exercise 7.1. So starting with the question number 1, is 9 a factor of 1089? Is 9 a factor of 1089? तो क्या जो 9 है वो 1089 का factor है. Okay, question is 9 a factor of 1089? So this is the question here. So how we can calculate? तो देखिए 9 इसका फैक्टर है या नहीं. तो फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं. ओके, सो लेट्स कैलकुलेट, लेट्स डिवाइड दिस विद दिस एंड यू कैन फाइंड आउट क्या वो इसका फैक्टर है या नहीं. सो लेट्स डिवाइड 1089 with 9. So if 9, जब जो 1089 है, if it is completely divisible by 9, so that means 9 is the factor of 1089. 9 ones are 9. 10 minus 9, 1. This will be 0, 0. 10 minus 9, 1. This is 0. Bring down the next number, that is 18. 9 twos are 18. This is 0. Now bring down the next number, that is 9. 9 ones are 9. 9 minus 9, 0 या क्रॉस कुछ भी लगा सकते हैं. So as you can observe, so when we have divided 1089 with 9, तो no remainder is there. तो यहाँ पे हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा है. So that means 1089 is completely divisible by 9. तो कोई रिमाइंडर नहीं बचा है. That means 1089 जो है वो पूरी तरह से divisible है 9 से. So that's why we will say that yes, 9 is the factor of 1089. Question पूछा ना, is 9 is a factor of 1089? So we will write down yes. So the answer is yes. 1089 is the yes. Sorry. यहाँ पे आएगा yes. 9 is the factor. Yes, 9 is the factor
1089. Yes, 9 is the factor of 1089. So this is the solution of question number 1 of exercise 7.1. So you can pause it here and note it down in your notebooks. Okay, and this was from a today's session as well. So with this, I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next session. So till then, everybody, have a great day.